Woman power scripts history in student politics. For the first time in Patna University Student Union polls, a powerful message has been sent out. Top 3 posts swept by women. ABVP's Maithili Mrinalini elected president. Independent Saloni Raj elected General Secretary. NSUI's Soumya Srivastav elected Treasurer. The next chapter of women empowerment being written as we speak. Not in metros, but in India's hinterland like Patna. It's my privilege to introduce to you the trio that's rocked the Patna University campus by scripting history. It's, I think, 137 years, correct me if I'm wrong, that Patna University has had a woman president. It's been countless number of decades that the Patna University has 3 women in the top 3 posts, and all of them elected by free will of the students of Patna University. Before I, bring in the 3 of you, congratulations, all 3 of you, great examples of women empowerment, the kind of inspiration that you will give to the many girls who are studying in Patna University and practically fighting against the odds, because there have been various examples of that. I want to quickly introduce our viewers to Maithili Mrinalini. She's been elected as the president of the Patna University. She represents ABVP. She comes from the ideology of ABVP, the student wing of the Bharatiya Janata Party. Saloni Raj has been elected as General Secretary, Patna University. She was an independent because she didn't want to subscribe to either ideology. And Soumya Srivastav has been elected as Treasurer, Patna University. Soumya Srivastav comes in from the NSUI, the student wing of the Congress Party. First up, devoid of what ideology either of you come from, you've scripted history. Congratulations. It's a privilege to have you in the studio and showcase, the 3 of you to the rest of India, because you're coming in from Bihar and there are so many stereotypes that are associated where, Bihar is concerned, Bihar politics is concerned, why most girls really don't want to enter politics, especially in the Hindi heartland. So, great stuff, guys, great stuff. First up, Maithili, correct me if I'm wrong, 137 years, and you've scripted history as being the first woman president of Patna University. What does it feel like? Ma'am, being the first female president of the Patna University in the past 107 years, it feels 107 years, you've corrected pride. me there. The amazing sense of gratitude. You've corrected me, it's 107 Yes, years, it's not 137 years. Okay, go ahead. So first of all, ma'am, it's a sense of pride, it's a sense of privilege, it's a sense of gratitude to all my voters, to all my students, and it's a sense of gratitude to Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. I am overwhelmed. I might not express in word that how lucky and how honorable I am feeling right now to represent the entire Patna University as its first female president. ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य का विषय रहा हमारे लिए, हमारी पूरी परिषद के लिए, इसके कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि परिषद परिवार रहा और इस परिवार का जो समर्थन मिला, पूरे विद्यार्थियों का जो समर्थन मिला, एक नई दिशा को, एक नए आयाम को, एक नए बदलाव को, वो भाव विभोर कर देने वाला था. और इसके साथ साथ एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द सेंस ऑफ ड्यूटी, दैट इज ऑल्सो incorporating within me. I really feel that along with the happiness that I am enduring right now, I have to inculcate the responsibilities, the sense of duties that I am bound to, and the rules and regulations that I will have to obey and abide with for the welfare of the students of this university. Maithili, what was the winning margin? Ma'am, the winning margin was approximately 600 to 650 votes, ma'am. Well, not bad. That is super stuff. Saloni, I want to bring you... I got the total vote of... Yes. Go ahead. Say what you have to say. Ma'am, I got the... yes, ma'am. No, I got the total vote of 3,524 votes, ma'am. All right, super stuff. Maithili, congratulations. You've scripted history, but so has the young girl sitting next to you as an independent, Saloni Raj, who
fought a tumultuous battle, Saloni. I saw that video clip. Before I come to you, I'm going to play that out, where, you know, you were exasperated, but that war cry that I'm going to rise above this petty politics that led up to the election, you know, went viral, caught the nation's imagination. Listen in, and then I'm going to come back to Saloni. जो भी ऐसा किया ना, मेरा मुंह पे गोली चलाओ, मेरे सर पे चलाओ गोली, मेरे लोगों के सामने क्यों ऐसे करते हो? हम आपको ओपन चैलेंज देते हैं, जो ये सब कर रहे ना, मेरे सर पे गोली ठोको। लड़की समझ के क्या समझ रखा है तुम लोग? मतलब हमको ये कहना है कि लड़की समझ के कमजोर समझ लिया हो? हम इंडिपेंडेंट निर्दलीय वो किए है ना, जो तुम लोग संगठन वाले नहीं कर पाओगे, समझा ना? अब जो भी ये सब किया है, हम ओपन चैलेंज देते हैं, आके मेरे सीने में तुम गोली ठोको। और जो भी किया है, हम ओपन चैलेंज देते हैं, मेरे सर पे आके गोली चलाओ, तब हम मानेंगे। सारा तुम लोग अपने आप को समझे क्या हो? यहाँ पे क्या मेल डोमिनेंस चल रहा है क्या? एक लड़की अगर जीतना चाह रही है, एक लड़की अपने दम पे जीतना चाह रही है, तो तुम लोग सबको मिर्ची लग रही है ना? वो खरीदी है ना, जो निर्दलीय हो गए, तो तुम लोग संगठन वाले सब नहीं कर सकते हो। और इस बार लड़की जीतेगी और छात्र संघ राज करेगी और निर्दलीय जीतेंगे। तुम लोग को क्या लगता है तुम लोग डरा सकते हो हम लोग को? नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। सीना ठोक के बोलते हैं, आके गोली चला के जाओ तुम लोग सब। Saloni, super stuff. Hat tip, if I could. You were crying, then that war cry, and in the end, that this time do what you may, a ladki will win, an independent will win, and come to what you are. This is amazing, Saloni. It's never happened for an independent, leave alone an independent who is a woman candidate. How does it feel? Ma'am, it feels like a pride. It feels like I'm bounded with so much responsibilities with me. And ये जो responsibility मिली है मेरे को, and मेरे को ये वादा है, मेरा ये वादा है विश्वविद्यालय से, मेरा ये वादा है पटना यूनिवर्सिटी से कि जिस विश्वास के साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 4400 वोट से एंड 2400 वोट मार्जिन से उन्होंने जिताया है, इस विश्वास को मैं कायम रखूँगी. I'll just work for them. I'll work tirelessly. I'll work selflessly for the student of this Patna University. सलोनी, एक चीज़ बताइए, जो जब ये वीडियो लिया गया आप रो रही थी, फिर आपको बहुत गुस्सा आया, फिर आपने एक चैलेंज किया कि एक लड़की ही जीतेगी, इंडिपेंडेंट ही जीतेगी. क्या चल रहा था आपके जहन में, दिमाग में उस वक्त? मैम, फर्स्ट जब मेरे को पता चला कि मेरे सपोर्टर्स को, मेरे टीम मेंबर्स को बहुत मारा गया है जस्ट बिकॉज कि दे वांटेड टू हैम्पर माय कैंपेनिंग, जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग कैंपेनिंग, दे मेंटली ट्राइड टू हैरेस मी. जब मेरे को ये पता चला तो एट फर्स्ट आई क्राइड अ लॉट इन फ्रंट ऑफ ऑल माई टीम मेंबर्स एंड देन आई डिसाइडेड नो, I have to give a bang on them. I have to just say aloud, I have to raise my voice against this patriarchal thinking that a girl is independent, a girl is lonely. No, the girl is not lonely, the girl is going to win, the girl is going to win with maximum votes. तो वो जो वीडियो था उसमें जो मैंने शुरू में जो मैंने रोया वो जस्ट मैंने, क्योंकि भैया को अपने जो टीम मेंबर्स थे जिनके ऊपर ये हुआ था उन्हें मैंने जस्ट देखा और उनकी हालत देखकर I was broken. I accept this fact. I was broken because a person who is doing efforts from day to night, campaigning rigorously and aggressively, and you are just trying to hurt them, you are just trying to stop by hurting them, you are trying to stop me by hurting them. तो ये देखकर मेरे को बहुत बुरा लगा था, and ultimately that aggression, that anger was mean it. That aggression and anger was just because but you channeled the aggression and you channeled the anger to actually win an election which was against all odds, Saloni. You know, one thing can be clearly said, that the next chapter, at least in India, women empowerment is not being written in cities like Delhi where I stand, but possibly cities like where the likes of three of you are, which is Patna. And I think the three of you are shining examples of exactly that. I just want to cut across to Soumya Srivastava. Saloni has been represented as General Secretary, elected as General Secretary, independent. Soumya has been elected as Treasurer. She comes in from the NSUI. Soumya, top 3 positions in Patna University, all women, devoid of ideological lines, and it's, you know, it's ironical, but it's a beautiful irony because all 3 of you bring in very diverse ideologies to the platter. You have an ABVP representation, Soumya, you bring in the NSUI, and then you have Saloni, who comes in as an independent, doesn't want to subscribe to either ideology. Ironic.
सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। हम तीनों प्रत्याशी अभी जो नवनिर्वाचित हैं, मैथिली अध्यक्ष पे, सलोनी महासचिव पे और सौम्या श्रीवास्तव यानी कि मैं कोषाध्यक्ष पे, हम अलग अलग संगठन और निर्दलीय आए हैं। किंतु हमारा सबसे अहम जो हमारे विश्वविद्यालय में जो हमें बदलाव करना है, हमारा अहम मुद्दा यही है कि हम सब मिलकर छात्र हित के लिए आगे बढ़ें। संगठन हमें समर्थन, हमें मदद, सहयोग, योगदान और एकजुटता प्रोवाइड कराती है, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा नेतृत्व बनता है कि हम सब मिलकर विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएं। संगठन को नहीं, हम विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हैं, हम संगठन के सहयोग से विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे पटना विश्वविद्यालय और छात्रावास के तमाम छात्र छात्राओं को धन्यवाद है। मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे आगे बढ़ने में मुझे समर्थन दिया। मैं स्पेशली अपनी पटना वुमेंस कॉलेज और मगध महिला की छात्राओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे एक तरफा जिताने में मदद किया। मैं ABVP के ओमजय को 901 वोट से हरा के आगे लीड की हूँ। तो मैं अपनी पार्टी, अपने लोग और अपने डिपार्टमेंट के भूगोल विभाग के शिक्षकों और मेरे जितने भी तमाम सीनियर, जूनियर और मेरे जितने भी दोस्त हैं, अपने माता पिता सबकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हर कदम कदम पे मेरा सहयोग किया है, दिन रात मेरा मनोबल बढ़ाया है। मैं उन सब की शुक्रगुजार हूँ। Maithili, I want to come back to you because to be the president, campus politics, we've all seen it in films, can be very down and dirty and very political. But especially there is something which is said when women come to power, their politics is different. How different will be the politics of three of you? You represent very, very diverse ideologies, but will there be any commonality in it? How different will the first woman president for Patna University in 107 years be than what the many men have been till now, Maithili? Ma'am, I came into this election with the slogan Maitri, Jagriti, Pragati ka nara, fir sara jagat hamara. And I think that this very line is the basic common point among all of us, the central panel which is working together. Separately, if you see ideology, if you see the different parties we belong to, then we might appear as 5 different fingers. But together, we are going to work as a fist, very strong together, and this fist will rise once again in the development and in the once again writing the new history of Patna University that will rewrite its legacy. If I talk about how different my leadership would be, then of course this time I have come with a mindset with the appeal that this time the leadership is going to change, the strategy is going to change, and of course we are having the new strategies, the new plans in our mind with which we are going to work for this university, because this victory is not just my victory, is not just the victory of Maithili Mrinalini. This is the victory of students. This is the victory of each and every Karyakarta of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad. This is the victory of each and every individual who resonates with the ideology that we are together for the students' welfare, that we are together with nationalism. This is the victory of each and every individual that has risen above the casteism, favoritism, biasness or any kind of divide in the society. This is the victory of a united student community in the Patna University, and I pledge that I am going to relive it. I pledge that I am going to dedicate myself 200% into the development and the welfare of my students. And ये मेरा वादा है हमारे विद्यार्थियों से, हमारे भाइयों बहनों से, हर उस इंसान से. Before I bring in Saloni, I want to ask you one quick question. You know, usually because where the president, the general secretary, the treasurer come in from different political parties, there's a lot of friction. Will there be at least sisterhood amongst the three of you which rises above politics and for the betterment of students? Do you think that is a possibility? Yes ma'am, of course that is not only a possibility, that is which is going to happen. क्योंकि हम तीनों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए काम करने के लिए आए हैं. जैसा कि अभी हमारी कोषाध्यक्ष जी ने बताया कि हमें संगठन सपोर्ट करता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें छात्रों के हित के लिए काम करना है. तो ऑफ कोर्स सिस्टरहुड से ज्यादा ये जो एक वेलफेयर की भावना है हम तीनों में, ये कॉमन पॉइंट रहेगी. फ्रिक्शंस अपनी जगह है और शायद जब छात्र हित की बात आती है तो सारी आइडियोलॉजी एक साथ, एक जगह और एक दिशा में काम करती है. जहां पर
कोई डेविएशन नहीं होता है। और इन केस अगर हम लोग साथ में काम कर रहे हैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, कुछ अग्रीमेंट्स होंगे, बट अल्टीमेटली आई अश्योर यू कि इस लोकतंत्र में इस पूरे जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा उसमें जो डिसीजन निकल करके आएगा वो सारी रिफ्ट और सारी कॉमनैलिटीज के बावजूद भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वेलफेयर के लिए होगा। सलोनी, इंडिपेंडेंट चूज करना बहुत टफ पाथ है क्योंकि आपको जो संगठन की बात की जा रही है, द सपोर्ट ऑफ अ संगठन विच मैथिली स्पोक ऑफ, विच सौम्या स्पोक ऑफ, you didn't have any support of a sangathan. You were independent, you did it of your own volition, you did it with your own strength. Why independent, Saloni? First question. Because ma'am, being independent, you are free. You are above all the political parties to work according to your needs, to work according to the needs of the student of this university. And I personally believe that if you want to remove the corruption from Patna University, if you want to remove the corruption from the university you are working in, first and the foremost thing is that to remove the political influence. And being an independent candidate, I can raise question to all the people who are working with me. I can raise question, I can be bias free, I cannot only work for a particular gender, I cannot even work for a particular political party, but I can work for the welfare of the Patna University. And being independent, personally I can say that आप independent तब जाते हो जब आपको संगठन टिकट नहीं देता है, but I personally gone for independent just for my sake, for the sake of Patna University, क्योंकि मेरे को हर संगठन से ऑफर आए थे, but मेरे को ये पता था कि अगर आपको विश्वविद्यालय में सही से काम करना है, if you want to remove all the biasness and corruption from the university, you need to work independently, you need to work for the student, you need to work for the welfare of the student university and the student union. You know, and that's possibly the reason why Saloni, and nothing, you know, taking away from the victory of, you know, both Maithili and Soumya, but you won from the largest margin. And I think that could be the reason why, you know, it was scripted the way it was scripted, because you were independent. I just want to, before I go to Soumya, all three of you, your issues have also been women-centric, which is very interesting, because if there was a man or, you know, a young man running for the post of the either of you, then issues like sanitary napkins on, you know, campus would not have, you know, come up. And you all spoke of that because there was an urgent need to introduce sanitary napkins where, you know, your campus is concerned. You have put up a lot of issues that concern women that usually don't get spoken of in college life, Soumya. जी, प्रचार प्रसार के दौरान तमाम छात्र छात्राओं से बातचीत करके हमें यही पता चला कि हमारी छात्राएं पटना विश्वविद्यालय में अनुपात में सबसे ज़्यादा हैं, किंतु कैंपस में फ्रीली घूमने में उन्हें डर लगता है, उन्हें संरक्षण नहीं मिलता है। तो नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष होने के कारण मेरा सबसे पहला एजेंडा हमारा यही है कि हम हमारी महिलाओं को, हमारी छात्राओं को संरक्षण प्रोवाइड करें और हमारे जितने भी तमाम छात्राएं हैं उनके लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल का गठन करें ताकि वो विदाउट हेजिटेशन, झिझक के बिना अपनी बात हमारी तक रख सके। और हमारे विश्वविद्यालय के कोई कॉलेजेस के पास टीओपी भी उपलब्ध है, लेकिन वो जाते नहीं हैं अपना कंप्लेन लिखाने। तो हमारा सबसे पहला एजेंडा यही है कि वो विदाउट हेजिटेशन अपनी बात रखे और वायलेंस फ्री कैंपस हो। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है उनके लूप होल के वजह से विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी थोड़ी फैली हुई है। विगत प्रचार के दौरान कुछ दिनों पहले हमारे कुछ साथियों, कार्यकर्ताओं पे भी गोली चली, मीडिया कर्मियों पे भी गोली चली, उन पे पथराव हुआ, उन पे मारपीट हुई। तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे विश्वविद्यालय के प्रशासन की गलती है जो इस चीज को रोकने में सफल नहीं हुई। Number one, women's security and violence free will be big issues. Maithili, because I'm running out of time, 2 issues that you will focus on. Ma'am, actually I have the manifesto of 5 basic 5P principle that constitutes Pravesh, Pariksha, Parisar, Pathikram and Parinam. These 5 will be the major issues on which I will be working, ma'am. Saloni, what's the top 3 issues that you as an independent will fight for?
मैम सबसे पहला तो ये इशू है कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक बोल्ड एंड कैलिबर लीडर की कमी है जो यहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंदी से विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुँचा सके, क्योंकि जो भी असमर्था है विश्वविद्यालय में, जो भी दिक्कतें आती हैं विश्वविद्यालय में, दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको सुनता नहीं है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसको तवज्जो नहीं देता है। तो फर्स्ट हमारा फॉरमोस्ट यही था कि हम आपकी आवाज़ को बुलंदी से बनेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। एंड सेकंड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स को लेकर जो यूनिवर्सिटी में बहुत कमी होती है, स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होते हैं। और थर्ड एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज सेंट्रल लाइब्रेरी इशू, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारा लाइब्रेरी 24/7 अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। तो उस लाइब्रेरी को 24/7 अवेलेबल करवाना स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारा 3 बेसिक एंड द फॉरमोस्ट एजेंडा रहेगा, जिस पे हमें काम करना है, जिस पे हमें लोगों को इसमें सुधार चाहिए। All three of you, more power to you. Congratulations again, and let's hope you rise above what has been the usual norm in politics of Patna University. Do well, do everyone proud, and especially do all the women who've come together and voted for you proud. Thank you, and we'll follow up in a couple of months. Thank you, all three of you.